जाति प्रमाण पत्र तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। Yes. इसको तो जो जानकारी विधानसभा को दी जा सकती है, पार्लियामेंट को दी जा सकती है, ये क्या बात है? ये ऐसी कौन सी व्यक्तिगत जानकारी मांग ली इन्होंने? अगर कोई फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट से नौकरी कर रहा है तो जाति प्रमाण पत्र तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नहीं, अरे एक सेकंड, वो आप सही बोल रहे हैं, बट मेरा ये कहना है, अरे नहीं, आप यू हैव टू जस्टिफाई योर ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर इन द लाइट ऑफ दीज प्रोविजंस दैट ऐसी कौन सी व्यक्तिगत जानकारी मांग ली इन्होंने? Lord, in this petition, I am challenging the impugned order which is passed by the State Commission, Lord. They have rejected my appeal, my Lord, by stating that particular provision come under the section of 81J, invasion of privacy. क्या जानकारी चाह रहे थे आपके लिए? Seeking information for appointment date of that particular person who is working as an assistant project officer. वो कैसे प्राइवेसी में आ जाएगी? आप आधे दिन दे देते हैं, आधे दिन नहीं देते जानकारी, क्या बात है? For a moment, my reply may be seen. The petitioner sought information that the petitioner's application is at page number 27. Page 27, yes. जी. हाँ, क्या लिखा उसमें? That is on page number 27. नियुक्ति की तिथि व नियुक्ति आदेश। एंड जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। Yes. इसको तो जो जानकारी विधानसभा को दी जा सकती है, पार्लियामेंट को दी जा सकती है, ये क्या बात है? ये नहीं, अरे एक सेकंड, वो आप सही बोल रहे हैं, बट मेरा ये कहना है, अरे नहीं, आप यू हैव टू जस्टिफाई योर ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर इन द लाइट ऑफ दीज प्रोविजंस दैट ऐसी कौन सी व्यक्तिगत जानकारी मांग ली इन्होंने? इंफॉर्मेशन ये सारी जानकारी you file affidavit, better affidavit. लिखिएगा. Petitioner's contention is that the information sought by him was in relation to appointment or date of appointment and the copy of appointment order in relation to one Shri Ram Jeevan Verma, Assistant Project Officer, Jila Panchayat Dindori. He had also sought copy of his caste certificate. Full stop. These are the documents which are not in the private nature. Yet the Information Commissioner, Dr. Arun Kumar Pandey, has passed impugned order dated 12/9/2022 rejecting the application on the ground that it is barred by section 8(1) ja क्या है? जी 81J में 8(1)(j). Full stop. It is submitted that the information sought is the one in the public domain. It is not a personal information to be covered under section 8(1)(j). आप बोलें तो अभी अलाउ कर दें पिटीशंस को क्वेश करके, ये आपको टाइम चाहिए? इट मे बी अलाउड बिकॉज़ एंड इट इसके पहले भी एक आपने जजमेंट किया था वो मंदिर ट्रस्ट वाला, जिसमें मतलब द पब्लिक इंटरेस्ट वाज टेकन इनटू कंसीडरेशन। यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट दैट्स व्हाट है। अगर कोई फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट से नौकरी कर रहा है दैट इट मे बी अलाउड बिकॉज़ अल्टीमेटली उसमें जस्टिफाइड बिकॉज़ दीस डॉक्यूमेंट्स आर फॉल अंडर पब्लिक डोमेन। एक गलत कार्य करने में भी कुछ कंसिस्टेंसी रखिए आप। नेक्स्ट पैरा, श्री विजेंद्र सिंह चौधरी supports the order. Next, after hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that the information shown is the one which will be covered under the proviso will be covered under the proviso below section 8(1) of the Right to Information Act 2005, which provides that the information, which cannot be denied to the Parliament or a state legislature shall not be denied to any person. Full stop. A close scrutiny of section 8(1)(j) also reveals that only that information can be denied which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest. Full stop. Next para. In the present case, demand of caste certificate will not fall within the provisions of section 8(1)(j). Similarly, copy of appointment order and the date of appointment order are public documents and will not be covered under section 8(1)(j).
Full stop. Therefore, this court has no hesitation to hold that the learned information commissioner passed the order without appreciating the provisions contained in section 81J and without applying himself to the fact situation. Impugned order being cryptic and having failed to take into consideration the true meaning and import of section 81J and the proviso contained below section 8(1) of the Right to Information Act deserves to be quashed and is hereby quashed. Petition is allowed. It is directed that necessary information, except for the nature of work being performed by the private respondent, shall be supplied to the petitioner within 30 days of receipt of copy of this order, free of cost. Highly observed.